Okay, so let's begin with today's derivatives, application of derivatives. We've been doing increasing and decreasing functions, and so we did few problems. I hope you've gone through it. So we'll do few more. Now these some of these problems are I'm taking, not some, in fact all of them I'm taking from R.D. Sharma, and most of these problems that I'll take today are actually solved examples. Okay, so you'll say, now why are you solving solved examples? Two reasons. First is you all don't have this book as of now, as much as I know. The second thing is the solved examples are also important because they teach you a lot of things. Okay, so the reason they have kept it as a solved example is so that you may understand those things. So that's the two reasons, and then I'll do few problems which are from the unsolved examples. Okay, so today's emphasis will be on mostly on the solved examples. That doesn't mean I'll just copy everything that's there, but it's just the examples are solved examples. Now what happens is sometimes some teachers don't tell the students that this is a solved example, and so I don't want to do that. Okay, I'm telling you it's a solved example. Students later on come to know sometimes that it's a solved example. So क्या रे, ये सर ने इसको कुछ आ रहा नहीं था, इसने सर ने सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया और खुश हो गया. तो वैसा नहीं है, ये एग्जाम्पल्स थोड़े थोड़े इम्पोर्टेंट है. Okay, so now this example that I'm taking is not so important, but it's like a revision of what we did last time. Okay, so without wasting too much time, I'll go with this very fast. Okay, so the first problem that I'm taking from the solved examples is you have to separate interval 0 to pi by 2. Okay, so now you'll get this in many ways now. Okay, and the function is given f of x is equal to sine raised to 4x plus cos raised to 4x. This is what the function is given to you, where it is increasing and decreasing. जिधर increase हो रहा है उसका intervals बताओ, जिधर decrease हो रहा है वो intervals हमको बताओ. ओके, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि ये जो फंक्शन दिया है ये 0 to पाई बाय 2 में किधर इंक्रीज हो रहा है किधर डिक्रीज हो रहा है वो इंटरवल्स बताओ. लाइक इन बिटवीन 0 to 90 degrees, till where this function is increasing, till where it is decreasing. So for example, from 0 to say 30 degrees it is increasing, and from 30 to 60 degrees it is decreasing, and maybe from 60 to 90 it is again increasing, or something like that. Okay, so just let us know where it is happening, divide it in those intervals. Okay, so हमारा काम ही आसान है. We will go by f dash x. Now what we can do is we can reduce this work. ये f of x है तो इसको f of x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. This is sin square x plus cos square x the whole square minus 2 sin square x cos square x. Okay, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो. Yeah, if you don't want, take derivative directly f dash x. There shouldn't be any problem if you take this derivative directly, but I'm just letting you know that this procedure is also there. So 1 minus, and ये भी 2 sin x cos x साथ में है, तो मैं क्या करूँगा, this I'll write it as 2 sin just 1 minute, 2 sin x cos x, एंड दिस इज होल स्क्वायर ऐसे लिख दूंगा. बट इधर था 4, सो एंड सॉरी हियर इट वाज 2, एंड आई एम व्हेन यू स्क्वायर फ्रॉम हियर यू गेट 4, सो आई विल डिवाइड बाय 2. तो ये मेरा इतना काम हो गया. दिस विल बिकम इक्वल टू 1 minus half, and 2 sin x cos x is sin 2x, so this will become sin 2x the whole square, which is sin square 2x. ये मेरा f of x हो गया. बेसिकली ये नहीं किया तो भी चल जाएगा. इट्स ओके इफ यू डोंट डू दिस, you take this one's derivative directly and you can still solve, you'll get to the same conclusion, so there won't be a major issue. f dash x तो कुछ भी करके वही आएगा. So f dash x क्या आएगा अभी इसका 0 minus half, and what will this be, आउटर फंक्शन क्या रहेगा, ये ब्रैकेट वाला, करेक्ट. सो इट विल बी 2 sin 2x into derivative of sin x, the inside function, that is cos 2x into d by dx of 2x, so that is 2. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस. आई हैव रिटन इन वन गो. अभी तो ये आना चाहिए, नहीं आते रहेगा तो फिर भी पूछ लो, अभी भी टाइम गया नहीं है. और यू कैन सी द प्रीवियस वीडियोज़ and see, and if the video that you're searching for is not there in your list and whatever it is, then I'll try and teach you once again. Okay, it's not a problem. ठीक है.
Okay, so now we will get this. Now what happens is this 2 and this 2 will cancel. Okay, एक 2 कोई तो cancel हो जाएगा. This is not 2 sin 2x cos 2x, so that is sin 4x. So this will be minus sin 4x. ये हमारा f dash x आ गया. राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट गोइंग लिटिल फास्ट. तो अभी ये एफ डैश एक्स तो 4 साइन 4x आया, तो ये हमारा एंगल आ रहा है 4x, और हमको देखना है इन द इंटरवल 0 to π/2 फॉर x, राइट ना. तो हमको चेक करना है कि अगर x 0 to π/2 में है तो 4x किधर रहेगा. सो वी हैव दिस 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2. Correct now. We have 0 is less than x is less than π/2. Now remember one thing, in this case actually it's less than or equal to. ठीक है. सो 4x किधर रहेगा, मल्टीप्लाई कर लो, ये 4x हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 है, एंड दिस विल बी 2π. करेक्ट ना. सो 4x लाइज बिटवीन 0 to 2π, यानी कि ये जो पार्ट है माइनस साइन 4x, इसका जो एंगल है ये 4x, ये किधर से किधर तक जाता है, 0 to 2π. x कितना जा रहा है, 0 to π/2 ओनली, बट 4x कितना जा रहा है, हाउ मच इज 4x गोइंग फ्रॉम 0 to 2π, पूरा सर्कल ले रहा है ये एंगल, यानी कि साइन के पूरे एंगल्स आ जाएंगे. करेक्ट ना, इन द एंटायर सर्कल ऑफ 360 डिग्रीज. तो हमको ये तो पता है ना, केस 1 हमको ये पता है that this function sine function is positive. Correct na, it is positive. Where it is positive, where is it positive, greater than 0, when it's between 0 to π in the first quadrant and second quadrant. X, okay, I'm sorry, I'm just writing this. Sine x as a function is always greater than 0 whenever it is between 0 to पाई फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द सेकेंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, लेकिन हमारा एंगल इधर क्या है, 4x है, राइट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, एज लॉन्ग एज इट्स इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वाड्रेंट. हमारा थीटा इधर क्या है, 4x. सो वी विल हैव साइन 4x टू बी ग्रेटर देन 0 वेन एवर आर angle is between 0 to pi, that is 4x is between 0 to pi, right. But if sine 4x is greater than 0, then it's obvious that minus sine 4x will be less than 0 whenever we have 0 is less than 4x is less than pi, right. But हमको, so what we have discovered that this minus sine 4x is less than 0, ये f dash x is less than 0. F dash x is less than 0 whenever you have the situation that 0 is less than x is less than π/4. So as long as x is between 0 to π/4, f dash x is less than 0. Correct. As long as x is between 0 to π/4, f dash x is less than 0. What does this imply? This means f is decreasing. Where is it decreasing? In the interval 0 to π/4. आसान काम हो गया, राइट. अंडरस्टूड. सो 0 to π/4 में ये f of x जो हमको दिया था फंक्शन f of x, इट इज डिक्रीजिंग, सॉरी, ठीक है. नाउ लेट्स कंसिडर द अदर पार्ट, एंड दैट इज व्हेन इट्स बिटवीन पाई to 2π. Who is between pi to 2π? 4x. Okay, so whenever we have the situation that theta is greater than pi and less than 2π, we know sin theta is less than 0. लेकिन हमारा theta इधर क्या था, 4x ना, we had theta to be 4x, correct, 4x f dash x का ये आ रहा था sin 4x. So whenever 4x is greater than pi and less than 2π, obviously sin 4x will be less than 0. What does this mean? When you divide by 4, π/2 is less than x is less than π/4 is less than x is less than π/2. In that case, sin 4x is less than 0. So whenever x belongs to this interval, sin 4x is less than 0, it's obvious that minus sin 4x will be greater than 0. But minus sin 4x क्या था, f dash x is equal to minus sin 4x. So what does it mean? This means f dash x is greater than 0. I'm sorry, it's gone. I'll just repeat this again. Okay, I'll repeat this.
it went off over there, I didn't realize. Okay, I'm so sorry. So I think I had finished till here. uh, okay, ये दिखाई दिया f is decreasing. So let's consider case 2. Okay, case 2. So we know this much, that whenever theta is less than is greater than pi and less than 2 pi, what happens, sin theta will be less than 0, right? But हमारा theta इधर है क्या, 4x. So whenever 4x is greater than pi and less than 2 pi, we will have sin 4x to be less than 0, right? Correct na? Third and fourth quadrant में sin is negative. So what will happen to minus sine 4x? Minus sine 4x will be greater than 0. But minus sine 4x is actually what? F dash x. So f dash x is greater than 0. Where when 4x is less than 2 pi and greater than pi. In other words, pi by 4 is less than x is less than pi by 2. So in that case, f dash x is greater than 0. What does this mean? F is increasing in the interval. Which interval? In the interval pi by 4 to पाई बाय 2. तो हमारे पास आ गया इसका इंफॉर्मेशन कि ये 0 टू पाई बाय 4 में डिक्रीज हो रहा है ये फंक्शन, एंड फ्रॉम पाई बाय 4 to pi by 2 it is increasing. Correct na? So we've got that information. So from 0 to pi by 4 it is decreasing, and from pi by 4 to pi by 2 it is increasing, and so our job is done. ओके तो अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहेंगे तो कैसे आएगा? सपोज दिस वी वर ड्राइंग अ ग्राफ, नॉट एग्जैक्टली अगेन द सेम नेचर आएगा ऐसा नहीं, मीन्स सेम ग्राफ आएगा ऐसा नहीं, बट नेचर हम लोग ढूंढ सकते हैं कि ये 0 टू पाई बाय 4 है एंड पाई बाय 4 इधर पाई बाय 2 है. सो एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. तो ये फंक्शन प्रॉबेबली ऐसे आ रहा है, राइट और फिर पाई बाय 4 तक डिक्रीज होता है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक इंक्रीज होता है. सो इट गोज ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस. ओके सो दैट्स हाउ द नेचर ऑफ द फंक्शन विल बी. अभी ये हो सकता है ये फंक्शन ऐसे आ रहा है वैसे जा रहा है, बट यू कैन हैव एन आइडिया इट्स साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x. सो इट विल नेवर बी नेगेटिव इन दैट सेंस. ये फर्स्ट इट विल बी अबाउ एक्स एक्सिस, बट इट्स करेक्ट. सो इट इज़ मोर लाइकली टू बी लाइक दिस. ये वैल्यू इसका क्या रहेगा? उसका मिनिमम वैल्यू रहेगा ना, करेक्ट ना. सो दैट वी कैन फाइंड आउट एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 इसका वैल्यू कितना आ रहा है. सब्सटीट्यूट एंड चेक. साइन रेज टू 4x कितना आता है? 1/4 ना. sin pi by 4 is 1/√2. So sin raised to 4x will be how much? 1/4. 1/√2 into 1/√2, 1/√2, 1/√2. So 1/4 plus 1/4 for cos raised to 4x. So half. तो ये आंसर इधर तुम्हारा हाफ आ रहा है. ये वैल्यू इसका मिनिमम वैल्यू है हाफ. दिस इज व्हाट वी विल सी इन मैक्सिमम एंड मिनिमम. एट प्रेजेंट हम लोग इसको मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इसको मैं ऐसे बड़बड़ कर रहा हूँ. ओके सो I'm not giving you the whole references right now. My focus is on increasing and decreasing. Fine. So ये हो गया हमारा problem. Right. The next problem we will check, and that should be which problem? Okay. So the next problem, again it's a solved example, and this problem is show f of x is equal to 3 by x plus 7 is decreasing. It is always a decreasing function. You have to show it's a decreasing function, and x is not equal to 0 obviously. ठीक है, x इक्वल टू 0 रहेगा तो f ऑफ x डिफाइंड ही नहीं रहेगा. सो दैट्स ऑब्वियस. तो सिंपल है ये, इसको तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बट क्या है तुम पहले टाइम सीख रहे हो तो पता नहीं होता है. सो एफ डैश एक्स क्या आएगा? ये डिक्रीजिंग है दिखाना है, तो हमको क्या दिखाना है? एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. तो पहले एफ डैश एक्स तो देख लो. Before showing f dash x is less than 0, we need to find f dash x. So f dash x will be -3 upon x square plus 0. अभी देखो x is always greater x square is always greater than 0. x का वैल्यू तुम कोई भी दे दो, नेगेटिव दो पॉजिटिव दो, x square will be always greater than 0. It's obvious 1 upon x square will always be greater than 0.
करेक्ट ना. सो ये पॉजिटिव ही रहेगा. तो ऑब्वियसली 3/x² विल बी ग्रेटर देन 0. 3 से मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा. एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय -3, देन इफ़ यू टेक -3/x², दिस विल ऑब्वियसली बिकम लेस देन 0. सो इसका मतलब क्या हो गया, f' इज़ लेस देन 0. इफ़ f' इज़ लेस देन 0, व्हाट डज इट मीन? f इज़ डिक्रीजिंग. करेक्ट. f is decreasing for every x not equal to 0. ओके, कोई भी x का वैल्यू ले लो पूरा रियल नंबर्स में, इट इज़ डिक्रीजिंग. सिंपल. ओके, प्रॉब्लम सिंपल है, बट ये लॉजिक पता नहीं होता है हर जन को, इसलिए हमको सॉल्व करना पड़ता है. सिंपल इट इज़, राइट. ओके, सो यू हैव टू बी एबल टू एनालाइज सच थिंग्स. फाइन. नाउ नेक्स्ट वी गो विथ इज, इधर एक देखा था मैंने प्रॉब्लम. ओके, दिस आई फाउंड दिस फंक्शन. यू आर गिवन f of x. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन as far as today is concerned. f of x is equal to x raised to 100 plus sin x minus 1. The question is, where is this function increasing? F is increasing in which, or on which of the following functions intervals is the function increasing? So f is increasing in which intervals, and हमको intervals दिए हैं, इसमें से चूज़ करना है किधर किधर इंक्रीज़ हो रहा है. सो 0 to π/2 एक इंटरवल दिया है, दूसरा इंटरवल दिया है π/2 to π, तीसरा इंटरवल दिया है 0 to 1, एंड फोर्थ इंटरवल गिवन इज -1 to 1. सो ये 4 इंटरवल दिए हैं. ये 4 इंटरवल में से कौन से इंटरवल में f इंक्रीज हो रहा है. तो हमको f है कि वी हैव टू शो वेयर इज f' ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो पहले चीज़ तो f' ढूंढना पड़ेगा. f' विल बी हाउ मच? इट विल बी 100x रेज टू 99 प्लस cos x. करेक्ट ना. f' तो इतना ही रहेगा, राइट. तो अभी हम लोग पहले ये इंटरवल में चेक करेंगे व्हाट हैपन्स इन दिस इंटरवल. अभी ये इंटरवल को भी f' यही रहेगा फॉर दिस इंटरवल. f' दिस फॉर दिस इंटरवल f' यही रहेगा. सो विल फर्स्ट चेक फॉर दिस इंटरवल. सो व्हेन यू हैव दिस इंटरवल, फर्स्ट केस व्हेन 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2. ओके, तो हमको सिर्फ चेक करना है ये cos x के साथ क्या हो रहा है. ये x रेज टू 99 का हमको सवाल ही नहीं है, बिकॉज x इज़ पॉजिटिव. तो ये 100x रेज टू 99, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो हम लोग पहले ये cos x का क्या होता है देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग 100x रेज टू 99 का देख लेंगे. सो इफ़ इट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाट वी नो इज cos x इज ग्रेटर देन 0. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. right. And what will happen to this 100x raised to 99? what can we say about 100x raised to 99? ये x अभी अगर पॉजिटिव ही ले रहे हो, कोई भी वैल्यू ले लो 0 to 90 degrees, करेक्ट ना. सो इफ़ यू टेक एनी वैल्यूज फ्रॉम 0 to 90, what will happen to this 100x raised to 99? it will be greater than 0. करेक्ट ना. इट विल बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ही रहेगा. सो वी विल हैव f' इज इक्वल टू 100x रेज टू 99 प्लस cos x. ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्रेटर देन 0 रहेगा. सो अगर f' is greater than 0, if f' is greater than 0, what can we say then? if f' is greater than 0, what can we say? करेक्ट नहीं है. f' is 100x raised to 99 plus cos x is greater than 0. so f is increasing. करेक्ट ना. f is increasing in that case. f' greater than 0 है तो f is increasing. so ये इंटरवल में, फर्स्ट इंटरवल में दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग. नाउ वी विल सी फॉर द सेकेंड केस. ओके, सेकेंड केस में क्या आ जाता है? यू हैव द सेकेंड केस एंड दैट इज व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 to π/2. π/2 to π, सॉरी, इज इट राइट? π/2. इट्स नॉट अ सेकेंड केस. ये हमको बोल रहे हैं कि ये सेकेंड प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम का सब प्रॉब्लम है. सो दे आर आस्किंग अस टू चेक. सो x बिलोंग्स टू π/2 to π, राइट. सो इन दिस केस अभी अगर x बिलोंग्स टू π/2 to π, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में चले गए हैं? दिस इज गॉन इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, करेक्ट ना. ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए हैं. सो दिस इज गॉन इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. व्हाट विल हैपन टू cos x? cos x will become negative. ये तो पक्का है. cos x will be negative.
राइट, बट cos x के वैल्यूज मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू cos पाई, cos not maximum, in fact it's the minimum value, cos pi will be -1. तो we can definitely say that -1 ये इसका minimum value है, करेक्ट ना. सो cos x will be greater than -1, करेक्ट ना, बिकॉज cos पाई बाई टू ज़ीरो है, उसके बाद जो वैल्यूज़ आएंगे वो नेगेटिव रहेंगे, बट दिल बी हाउ -0.5, -0.7, -0.9, -0.9999999, ऐसे करते करते किधर आ जाएगा, -1 तक आ जाएगा. व्हेन इट रीचेस पाई इट विल बी -1, -1 के आगे नहीं जाएगा. सो दिस -1 विल बी द मिनिमम वैल्यू इट विल हैव. द मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा इसका, 0. सो कॉस फंक्शन विल लाई बिटवीन -1 to 0, correct na. So it will be between -1 to 0 in the second quadrant. Cos x का values इतना ही रहेंगे. In the second quadrant it will be between -1 to 0, राइट. तो ये हमको तो मिल गया. सो बेसिकली हमको मिल गया cos x इज ग्रेटर देन -1, राइट. नाउ तुम अभी सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो अगेन एक्स इज बिटवीन पाई बाई टू. हमको भी दूसरा किसका देखना है, 100x⁻99. इसका क्या हो रहा है हमको ये चेक करना है. ओके, तो अभी हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे कि ये 100x⁻99 इज इट ग्रेटर देन -1 और नॉट, करेक्ट ना, या ये कोई वैल्यू से बड़ा है कि नहीं. सो नाउ सी दिस, एक्स इज बिटवीन पाई बाई टू टू पाई. ओके, तो तुम x का कोई भी वैल्यू ले लो, पाई बाई टू से पाई तक. ना पाई बाई टू से पाई, ना रिमेंबर पाई बाई टू नॉट इन रेडियंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ 180 डिग्रीज, बट ऑन इट्स ओन इट इज़ 22/7 अप्रॉक्सीमेटली, या 3.14, correct na. 3.14 divided by 2, so if you take 1 point something like this, okay, so if you go on that approach, if you go by that approach, what will happen to this, x⁻99 will obviously be greater than 1, because इसका minimum value कितना आएगा 3.14 का, 1 point कुछ तो 0 रहने दो, 2 रहने दो, कोई भी वैल्यू रहने दो, x⁻99 will be 1 point something raised to 99, and that will obviously be greater than 1. मैं भी ये 1 के पीछे क्यों लगाऊं, why am I interested with this one, because ये cos x has come greater than -1. but what I also have is, if x⁻99 is greater than 1, then obviously 100x⁻99 is greater than 100, correct. 100x⁻99 will be greater than 100. so ये जो हमारा f' था, f' what was it equal to, 100x⁻99 plus cos x, राइट. तो ये 100x⁻99 is greater than 100 and cos x is greater than -1, करेक्ट ना, इट्स ग्रेटर देन -1. तो ये ओवरऑल क्या होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 99. अभी मुझे वो वैल्यू से लेना देना नहीं है, आई जस्ट नो दिस इज़ ग्रेटर देन 0. 99 से अगर बड़ा है तो 0 से तो बिल्कुल बड़ा है. सो दैट मीन्स f' इज ग्रेटर देन 0. व्हेन इज इट ग्रेटर देन 0, व्हेन इज f' ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज बिटवीन पाई बाई टू टू पाई. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन नाउ, that means f' is greater than 0. so इसका मतलब हो गया f is increasing. okay, in which interval, pi by 2 to pi. okay, see now you will understand why my taking those problems is important. okay, अभी समझ में आएगा तुमको कि ये अगर प्रॉब्लम मैं इसे छोड़ दूंगा, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं बाद में. बट नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू लर्न मैथमेटिक्स नाउ. ठीक है. सो दैट्स वाई आई हैव बीन टेकिंग दैट सॉल्व एग्जाम्पल्स. अभी थर्ड इशू था हमारा, थर्ड केस क्या दिया है इधर, ये लोग ने दिया है 0 to 1. ओके, इफ़ यू रिमेंबर द प्रॉब्लम, आई डोंट नो वेदर आई रोट द प्रॉब्लम और नॉट. 4 इंटरवल्स दिए थे, या दिस वन. तो हम लोग ने ये 2 इंटरवल्स को देख लिया, दैट इट इज़ इंक्रीजिंग हियर, इट्स इंक्रीजिंग हियर. नाउ वी हैव टू चेक फॉर दिस टू, 0 to 1 एंड -1 to 1. ये केस में क्या होता है, अभी मेरा बुक ख़त्म हो गया. ओके, सो आई जस्ट गेट अनदर बुक, जस्ट 1 minute. okay, so I'll get another book. So this was what, physics. okay, should I start from behind, it's closed from here also, that's much better off. इधर भी फिजिक्स है, इधर भी फिजिक्स है. आई डोंट नो वेयर आई हैव बीन टीचिंग व्हाट. एनीवेज दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉर्टेड आउट इन फ्यू डेज टाइम. ओके, इक्विपमेंट कुछ कुछ आ गए हैं, लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट नाउ. सो हमारा प्रॉब्लम था
मैं वापस लिख लेता हूँ इधर. हमारा प्रॉब्लम था f of x is equal to what was it, x raised to 100 प्लस साइन एक्स माइनस वन, और हमको इंटरवल्स दिए थे 0 to π/2 and π/2 to pi, and then we were given 0 to 1 and we were given -1 to 1. इसमें से ये दो हम लोग ने देख लिए. दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ओवर हियर. ओके, सो नाउ दिस टू वी हैव टू चेक. हमारा f' क्या था? इट वाज इक्वल टू 100x रेज टू 99 प्लस cos x. ओके, तो अभी हमको ये थर्ड केस का देखना है कि इधर ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. सो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, ओके, दैट मीन्स 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1. तो हमको देखना है ये 100x रेज टू 99 का क्या होता है. व्हाट विल हैपन टू x रेज टू 99? ट्राई एंड थिंक. व्हाट विल हैपन टू x रेज टू 99? हमको सिर्फ देखना है पॉजिटिव है कि नहीं है. करेक्ट ना? सो विल दिस बी पॉजिटिव? ये 0 to 1 में what will happen to cos x? Okay, let's go by that approach. Now ये 0 to 1 है. अगर x 0 to 1 है, okay, then इसका वैल्यूज लाइक वी नो cos x इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यूज कितना रहता है? 0 to 90 डिग्रीज. ओके, या 0 to π/2. नाउ लेट्स ट्राई एंड थिंक π/2 इवन एज 3.14. अगर तुम 3.14 भी पकड़ लेते हो, ओके, तो व्हाट हैपेंस? इट विल बी 3.14/2, सो 1.07. सो इवन इन दैट केस 1.57, इवन इन दैट केस इट्स पॉजिटिव. 0 to 1, इन एनी केस दिस x एज लॉन्ग एज इट्स बिटवीन 0 to 1, एक्चुअली वो पाई रेडियंस 180 डिग्रीज होता है, तो 90 डिग्रीज है. ओके, सो इट्स पॉजिटिव. सो वी नो cos x इज पॉजिटिव. Okay, so as long as x belongs to 0 and 1, what happens? Okay, now ये जो 0 and 1 दिया है इधर, okay, remember this is given, this angles are in radians. Okay, this is 0 radians and 1 radian. Okay, तो ये भी थोड़ा सा याद रखो. It's 0 radians and 1 radian. 0 radians is 0 degrees, so no problem for us. 1 radian is how much? 1 radian is how much? Okay, pi radians is 180 degrees. So 1 radian is how much? 180 by pi. Correct na? It's 180 by pi. So in any case, if you calculate this, if you remember from last year and all those things, if you divide this by 3.14 and all, this approximately comes some close to 57.12 something degrees. I don't remember exactly, but it comes to this degrees. So your x, okay, for cos x for cos x is between 0 to 57 degrees. okay, ये जो values दिए हैं cos x को, ये normal numbers नहीं है. these are angles in radians for cos x. x ने अगर ये 0 उठाया इधर, ये f' के साथ आया है, तो ये एंगल रेडियंस में आ रहा है. ये x इज इक्वल टू 0 इज नॉट द न्यूमेरिकल वैल्यू. x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द न्यूमेरिकल वैल्यू 1. डोंट सर्च एंड फाइंड फ्रॉम योर लॉग टेबल्स कैलकुलेटर cos 0 is 0, cos 1 is whatever the value, and so this is positive. That's not the case. Here this 1 represents radians. Okay, it represents 1 radian. सो इन एनी केस 0 to 1 रेडियन, ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे. 57.12 डिग्रीज जो आप कुछ आता है, सो इवन दैट वाज नॉट नेसेसरी. बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, इट्स 1 रेडियन. 1 radian is obviously less than pi/2 radians. Okay, so I know it is positive. So for cos x it is positive. I hope you're achieving this. Cos x is greater than 0. अभी 100x raised to 99 क्या हो जाएगा? x raised to ये है 0 less than 1. So what will happen to x raised to 99? x raised to 99 obviously it will be greater than 0. ये less than 1 हो जाएगा, ठीक है, that's not a problem for us. Okay, or it might become, yeah, it will be very small because if x is less than greater than 0 and less than 1, तो x का value कैसे रहेगा? like half for example. So half raised to 99 is a very small value, 0.00000 value. रहने दो, बट वो जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है. सो इफ x रेज टू 99 इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली 100x रेज टू 99 दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. तो वी आर नाउ हैविंग 100x रेज टू 99 and x, what was this, cos x. This is greater than 0, this is greater than 0, so overall it is greater than 0. That means f dash x in any case is greater than 0.
not in any case, but in the case when it's between 0 to 1, right? So f is increasing, f is increasing in 0 to 1. Okay, it is increasing in the intervals 0 to 1. I hope you understand this. Okay, next we will consider the fourth part. Okay, and that is when x belongs to the interval -1 to 1. ओके तो अभी ये -1 to 1 हम पूरा भी ले सकते हैं, बट इसको ठीक से देखो, इसको हम लोग -1 to 0 एंड 0 to 1 ये दो चीज़ देख सकते हैं, करेक्ट ना. इट कैन बी डिवाइडेड इन टू इंटरवल्स, -1 to 0 एंड 0 to 1. उसमें से 0 to 1 वी हैव ऑलरेडी चेक्ड दैट इट इज़ इंक्रीजिंग. 0 to 1 में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है. अभी हमको देखना है फ्रॉम -1 to 0 व्हाट विल हैपन टू दिस फंक्शन. ओके, फ्रॉम -1 to 0. तो अभी x जब -1 आ जाएगा, ओके, व्हेन x विल बी पॉजिटिव, सॉरी व्हेन x विल बी नेगेटिव, देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस. ओके, दैट्स ऑल वी हैव टू चेक. ओके, सो हमको उतना ही चेक करना है. नाउ सी, अभी x जब नेगेटिव रहेगा, okay, let's try when x is negative what will happen. Okay, so like for example x is equal to minus say some -30 degrees. Now I'm saying 30 degrees but it will be minus pi by 6 radians ऐसे कुछ. तो okay, if you try and understand, वो 57 degrees तक जा सकते हैं ना, -57 degrees, 1 radian, -1 radian. So if you can go till that point, so you'll have minus pi by 6. तो -30 पकड़ लो. तो cos of -30 ऐसे जो कुछ वैल्यू रहेगा, या cos of माइनस जो आएगा वैल्यू, माइनस पाई बाई 6, -30 या इवन -10 डिग्रीज जो कुछ है विल बी cos x. Okay, it will be say cos 10 degrees only, and cos 10 degrees will be greater than 0. So cos of minus pi by 6 will be cos pi by 6 and it is greater than 0. So हमारा जो cos फंक्शन है वो तो greater than 0 है. बचा कौन है अभी, f of x में, f dash x में 100x raised to 99. इसके साथ क्या होता है इम्पोर्टेंट है, करेक्ट ना. इसके साथ क्या होता है दैट इज इम्पोर्टेंट. व्हाट विल हैपन टू दिस, दिस विल बी नेगेटिव. x raised to 99 नेगेटिव रहेगा वेन एवर x इज लेस देन 0. x raised to 99 कुछ भी करो दिस विल बी लेस देन 0 बिकॉज वो ऑड पावर है, नेगेटिव है. लाइक -3 रहेगा सपोज, इट वोंट बी -3 बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, -3 रहेगा तो व्हाट विल हैपन, -3 raised to 99 विल बी माइनस समथिंग, सो इट विल बी लेस देन 0. बट ये हमारा जो इंटरवल दिया है, दिस इंटरवल इज -1 to 0. तो ये x के वैल्यूज विल बी समवॉट लाइक -12, करेक्ट ना. तो अगर -12 raised to 99 लोगे तो व्हाट विल बी दिस वैल्यू, दिस विल बी वेरी स्मॉल वैल्यू, -0.0000000 समथिंग. और हमारा जो cos x का जो वैल्यूज आ रहा है वो भी दे विल बी पॉजिटिव. ओके, दे विल बी पॉजिटिव. cos x के वैल्यूज पॉजिटिव है बट वो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, वी डोंट नो. नाउ सी x, बिकॉज इट्स लाइक दिस, x बिलोंग्स टू -1 to 0, x कैन ऑल्सो बी इक्वल टू -0.00000, राइट. एंड इन दैट केस दिस x रेज टू 99, -0.0000 रेज टू 99, दिस वैल्यू इफ यू कैन चेक इट इन योर calculators and all, 0.00001 ऐसा अगर वैल्यू रहेगा, then this value will be a very large, this will be a very small value, right ना. this value will get as a very small value and cos x will be greater than 0. तो ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, cos x पॉजिटिव है, cos x नेगेटिव है. लेकिन cos x के वैल्यूज़ जो रहते हैं, cos x कैन टेंड टूवर्ड्स 0, करेक्ट ना. इट कैन टेंड टूवर्ड्स 0, यानी कि cos x का खुद का वैल्यू कैन गो टूवर्ड्स 0.00000. एंड अभी ऐसा हो सकता है कि cos x का सपोज वैल्यू है 0.0000005 और ये x रेज टू 99 इंटू 100 हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.000 से 1. बट ये माइनस रहेगा, तो तुम अगर इसको ऐड करते हो तो यू विल गेट दिस वैल्यू एज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0. बट इफ दिस वैल्यू इज -0.00005, या सपोज दिस इज तो वेर एम आई, no, in that case it will be negative. But if you consider this value 0.0005 and
this value is 0.000007, and if you are subtracting this, then this part will be greater than 0. So there will be points when it is greater than 0 and when it is less than 0. So तुम्हारे दो situations आएंगे that this will be either greater than 0 or it will be less than 0. I hope you are understanding this. ये explanation वापस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, basically it was just an explanation. ठीक है, so your x cos x is going to be greater than 0, that's not a problem. But ये जो x raised to 99 है, ये क्या रहेगा, this will be less than 0 and 100x raised to 99 will be also less than 0, right? And these values can match up with one another. They can in fact become 0 equal to, that means you can land up with 100x raised to 99 plus cos x to be 0. You can land up in a situation where this is sometimes greater than 0 and sometimes less than 0. So you cannot define exactly what is happening in this case. तो अगर तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये increase हो रहा है या decrease हो रहा है, then what will happen, f dash x is neither greater than 0 nor is it less than 0. So f is neither increasing nor decreasing. Okay, so f is neither increasing nor decreasing in this interval. Which interval? -1 to 0. बट अगर ये -1 to 0 हो रहा है, वैसे हमको चेक करना था -1 to 1. तो अगर -1 to 0 हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो हाउ कैन वी डिफाइन फ्रॉम -1 to 1? दो 0 to 1 हो, इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट ना? सो इन दिस केस इट्स नॉट इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 to +1. ओके, ये थोड़ा कैलकुलेशंस तुम्हारा खुद का लेके देखो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ओके, वो इसमें दिखाई नहीं देता है, जल्दी से समझ में नहीं आता है, बट इट्स योर जॉब जस्ट टू डू दैट वर्क. सो you are able to grasp what I've been saying. Okay, so that completes this problem. Now see, this was very important. ये जो झोल झमेले में से आया ये problem, specifically this last point, it was very important because you sometimes tend to think हाँ -1 है, so 100x raised to 99 है, छोड़ दो. Okay, that can sometimes become a problem. Okay, so I hope you understood this part. ठीक है. So now today I'll stop actually in these two problems only because it's already 37 to 40 minutes. So I'll stop over here and I'll continue this tomorrow. Okay, हमको इतना भी घाई नहीं है, we'll do this. I hope you can understand. Or I'll try and do some easier problem. कोई मिलता है easy तो I'll check it. Okay, so let's take some unsolved examples इसमें से. Which one to take? Okay, this is a small example. I can do this. Okay, so this यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा. I can do this means टाइम नहीं जाएगा. Okay, so you have f of x is equal to x square minus x plus 1. You have to prove that this is neither increasing, this function is neither, okay, not increasing but neither increasing nor decreasing. In which interval? -1 to 1. So it will match up with what we were doing right now. Okay, so ये थोड़ा तुमको हेल्प दे देगा. So f of x is equal to x square minus x plus 1. अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो हमको f dash x तो ढूंढना पड़ेगा. f dash x is 2x minus 1. Now see this, x belongs to -1 to +1, करेक्ट ना? हमको दिया है सिचुएशन x belongs to -1 to +1. Now what we will do is we will divide this in two parts. Again similar, -1 to 0 and 0 to 1. तो हम लोग देखेंगे -1 to 0 में क्या हो जाएगा. Okay, now you take any value between -1 is less than x is less than 0. तो हमको ये फंक्शन मैन्युफैक्चर करना है उधर. ओके, विल ट्राई एंड मैन्युफैक्चर इट ओवर हियर. सो ये क्या चाहिए हमको, 2x minus 1. So I'll multiply by 2. So this will be -2 is less than 2x and this is 0. Okay, and I'll subtract this. So -3 is 2x minus 1 is -1. Correct? It's less than -1, between -1 and -3. Correct? Have I done it correctly? Okay, or you can do it like this also. You have -1 is less than x is less than 0. तो ये 2x minus 1 है, इसको तुम 2 into x minus half ऐसे ये चल जाएगा. but this is also another way. So you need to have 2 into x minus half. So x minus half क्या देता है तुमको, this is less than 0.
okay, minus half है, but that's basically less than 0, and this is -1 minus half, and so that is -3/2 जो कुछ आता है, but basically ये जो x minus half is less than 0 and 2 into x minus half will obviously be greater less than 0. Here also what we are basically getting is 2x minus 1 is less than 0. So मुझे 2x minus 1 less than 0 मिल रहा है, यानी कि f dash x is less than 0. So if f dash x is less than 0, this implies f is decreasing. Correct na? F is decreasing. In which interval? F is decreasing in the interval -1 to 0. Right? Now, if we consider from 0 to 1, 0 to 1 में अगर हम लोग x consider करते हैं, then what happens? We will have 0 is less than x is less than 1. So what will happen to this? This will be 0 is less than 2, x is less than 2. And now if I subtract 1, so this is greater than -1, and this is 2x minus 1, and this will be 1. Okay, so it's greater than -1 and +1. Either ये problem हो जाता है, we should go by 2x. So what we will do is we'll consider 2 into x minus half. 2 into x minus half, इसका क्या होता है when it's between 0 and 1? So if it's 0 is x is less than 1. So if I subtract minus half, okay, so what will happen in that case? So no, this is not going to help us. Okay, तो ये इधर तक तो नहीं help कर रहा है. So what I should have done is probably ये x minus half आ रहा था ना, so I should have checked the intervals not from -1 to 0, I should have checked it from -1 to half. Okay, if you check the same way, if you check from -1 to half, then you will find that 2x minus 1, in that case -1 to half is less than 0. Okay, like you can check it over here. Okay, ये half के थोड़ा सा कम. So like for example, if it is half only, then you will have 2 into half minus 1, so that's 1 minus 1 0. So इससे थोड़ा कम value रहेगा, तो naturally this will be lesser value -1, and so you will always have this value less than 0. ठीक है, and if you take from half to 1, if you take these values from half to 1, half is less than x is less than 1, and then if you check for x minus half, you will have 0 is less than x minus half is less than 1. In other words, 2 into x minus half, this will be greater than 0 and less than 2. In other words, this is greater than 0. F dash x is greater than 0. So f is decreasing in the interval. F is decreasing, okay, in which interval? Half to 1. Okay, f is decreasing in the interval half to 1. So from -1 to half it is decreasing. Over here it is increasing. I'm sorry, here it is increasing. Okay, it is increasing in the interval half to 1. Here it is decreasing. So that's how you get this done. Now you will say, sir ये क्या तुमने haphazard करके रख दिया? ये जानबूझकर किया है कि तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े. ओके, नहीं तो क्या नोट्स आ जाएंगे ना, तो फिर तो मैं बुक में से फ़ोटो लेके भेज दूंगा, या मैं पहले लिख लूँगा सॉल्यूशन, एंड फिर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये हो गया मेरा काम. तो ये थोड़ा सा तुमको कन्फ्यूजन देगा, बट समटाइम्स कन्फ्यूजन इज़ गुड, बिकॉज नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक, कि मैंने इधर गलती कर लिया था. करेक्ट ना, आई वेंट टू 2x minus 1, तो मुझे मिल नहीं रहा था इधर. ओके, तो मीन्स मिल रहा था बट हाफ आंसर मिल रहा था, तो -1 to 0 मुझे मिल नहीं रहा था. सो व्हेन आई सॉ दैट x माइनस हाफ को ये चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ये कोएफिशिएंट ऑफ x जब भी हम लोग 1 कर देते हैं वो काम ईजी हो जाता है. सो ये आ रहा था x माइनस हाफ. सो इफ़ आई वुड हैव सेपरेटेड इट इन द इंटरवल्स फ्रॉम -1 to half, इट वुड हैव बीन मच ईजियर. सो जब कर लिया तो ये आंसर आ गया हमारा. ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स दिस class for today. We still have few more problems to go, and you can recognize thoda sa increasing decreasing is little tougher. Okay, it's not that tough, but it's little difficult when you're studying it for the first time. अभी इतना साल पढ़ोगे तो आसान हो जाता है, but at present it will be little difficult. Fine, so that's all for today, and I'll try and put the computer notes from tomorrow. Okay, I'll try. I've not yet been able to do it. उसका recording मुझे जमा नहीं है, but वो चीज़ अभी थोड़ा सा लिखना सीखा हूँ. So let's see how it works out. Okay, so that's all for today.